हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। आपके एग्जाम का टाइम आ गया है और एग्जाम में ज़रूरत होती है रैपिड रिवीजन की। तो आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हैं ये हम क्लास 9 की साइंस का रिवीजन आज स्टार्ट करेंगे और इसमें हमने चैप्टर लिया है साउंड के चैप्टर का रैपिड रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखते जाइए, सुनते जाइए और अपना रिवीजन करते जाइए ताकि आपका एग्जाम से पहले ही आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन। पहला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर में, जैसे कि चैप्टर का नाम है साउंड की बात है। साउंड क्या है? तो साउंड इज ए एनर्जी विच मेक अस टू हियर। साउंड वो एनर्जी है जिसे हम सुनते हैं। अब हाउ साउंड ट्रेवल्स, साउंड ट्रेवल कैसे करती है? साउंड ट्रेवल बाय वेव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेव। एनसीईआरटी की बुक में ये आपका क्वेश्चन भी है कि हाउ साउंड प्रोपेगेट इन द मीडियम। तो हाउ साउंड ट्रेवल और प्रोपेगेट इन द मीडियम बाय वेव। वेव क्या है? वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम which carry energy from one point to another point without a direct connection with end points. So this is called a wave. Types of wave. Waves are of two types. Types of wave. One number is longitudinal wave. Longitudinal waves कौन सी waves होती हैं? Longitudinal waves which travels in the medium back and forth are called the longitudinal waves. How longitudinal waves travel in the medium? They make compression and refraction. Compression when particles of the medium are near to each other, are compressed than their normal position. It is called compression. And refraction when the particles of the medium are far away from their normal position. That is called a refraction. So in the longitudinal waves, there is a one compression and one refraction. Then compression and refraction, these are follow as these waves are called longitudinal waves. A second type of wave is transverse waves. Second wave is transverse wave. Transverse waves. In transverse waves, particles of the medium vibrate back, up and down. In transverse waves, particles of the medium vibrate up and down at 90-degree angle to the direction of the wave. जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उससे अप एंड डाउन पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं 90-degree एंगल पर। These waves are called transverse waves. Now examples of longitudinal waves. Longitudinal waves. Waves of sound in air. When we play guitar, violin, then sound is produced. So these waves are longitudinal waves. And waves of a sound of a spring when we pull a spring or push a spring, then sound produced. These waves are longitudinal waves. Transverse waves when we move a spring. A spring is fixed at a point and we move it from the another point, then it moves up and down to produce a sound. So such waves are called transverse waves. And waves on the surface of the water are transverse waves. Now characteristics of the sound. Sound के 5 characteristics हैं. First is wavelength, then time period, frequency, amplitude and speed. तो first wavelength. Wavelength, what is the wavelength? क्या है? Distance between the two compression, consecutive compressions and refractions is called wavelength. Compression and refraction. So distance between the two consecutive compressions and consecutive refractions is called the wavelength. क्या कहलाता है इसका? Wavelength. Distance between two consecutive compressions and refractions is called a wavelength. Wavelength is denoted by letter lambda. Denoted by letter lambda. Greek letter lambda. And its unit, SI unit is meter.
SI यूनिट वेवलेंथ की क्या है, मीटर है। तो समझ में आ गया वेवलेंथ क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या टू कंसेक्यूटिव रिफ्रैक्शंस इज कॉल्ड लैम्डा। और डिस्टेंस बिटवीन a compression and a rarefaction, distance between a compression and a rarefaction is half of the wavelength. ये क्या है, half of the wavelength, that is lambda upon 2. Now next is frequency. Next is frequency. Frequency, vibration, number of vibrations per second is called frequency. Number of vibrations per second is called the frequency of the sound. It is denoted by Greek letter nu. Denoted by Greek letter nu. And its SI unit is frequency की SI unit क्या है, hertz. hertz HERTZ, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल H एंड स्मॉल z, hertz. एंड थर्ड इज टाइम पीरियड. नेक्स्ट इज टाइम पीरियड. Time required to produce a vibration is called its time period. Time required to produce a vibration is called its time period. It is denoted by capital T. Denoted by capital T, and its SI unit is second. टाइम पीरियड की यूनिट जो क्या है, सेकंड. एंड टाइम पीरियड इज टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए वाइब्रेशन इज कॉल्ड ए टाइम पीरियड. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी न्यू एंड टाइम पीरियड? फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन ए सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. और ये क्या है, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वाइब्रेशंस, टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. तो रिलेशन बिटवीन द न्यू फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 upon का t. 1 upon का t. एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड. एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particles of a medium when a wave of the sound is travel through the medium. Amplitude क्या, amplitude is the maximum displacement or disturbance of the particles of a medium when a wave of a sound is travel through a medium is called its amplitude. Loudness of the sound is depend on amplitude. When amplitude is high, loudness of sound is more. So it's the question in your NCERT. Loudness is depend on which characteristic of the sound, that is the amplitude. And second quality of the sound, that is the pitch. Pitch depend on which characteristic of the sound? Pitch depend on frequency of the sound. These are the questions in your NCERT book. So revise these questions. Now next, that is the quality of the sound is next quality is speed. Amplitude is denoted by letter capital A, and SI unit is meter. SI unit of amplitude is meter, and amplitude determines the loudness of the sound. So how can we measure the loudness of the sound? The unit to measure the loudness of sound is decibel. Loudness of sound किसमें मेजर की जाती है, डेसिबल, dB, decibel. And now fifth characteristic of sound is
speed. The distance traveled by a sound wave in a second. The distance traveled by a sound wave in a second is called as speed, and it is denoted by V. And relation between the speed, frequency, and the wavelength is V is equal to frequency into wavelength, lambda. Frequency into wavelength, nu into frequency into wavelength, that is lambda, nu into lambda. आप इसको कैसे लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी इंटू wavelength. Frequency into wavelength. Now next quality of the sound is tone. What is a tone? A sound of single frequency is called its tone. Sound of single frequency is called tone. And next quality is note. Sound of mixed frequency is called note. It is a pleasant sound and we like to hear it. Note is a sound of a mixed frequency. It is a pleasant sound. Note, or we listen in music. The sound of music has the notes, so it is a pleasant sound. Now, next question is, why sound waves are called mechanical waves? Why sound waves are called mechanical waves? Sound waves को mechanical waves कहा जाता है. ये आपके NCERT की बुक का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि why sound waves are called mechanical waves. Sound waves are called mechanical waves because sound requires a medium to travel. Sound waves require a medium to travel. Sound waves को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, इसलिए साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल वेव्स कहलाती है. साउंड वेव्स नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. साउंड वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती, केवल मीडियम में ही ट्रेवल करती है. तो स्पीड ऑफ साउंड in different mediums. Speed of sound in different mediums. अलग अलग मीडियम्स में साउंड की जो स्पीड है वो कैसी है. स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स. इस मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड जो सबसे ज्यादा होगी, तो साउंड की स्पीड जो है सबसे ज्यादा होगी सॉलिड में, और उसके बाद होगी लिक्विड में, और उसके बाद साउंड की जो स्पीड है वो किस में होगी? एयर में. यानी कि एयर में सबसे कम होगी, गैसेस में सबसे कम होगी. अभी क्यों होगी? क्या रीजन है? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो पास होते हैं, उनमें डिस्टेंस कम होता है, अटैच होते हैं, इसलिए सॉलिड में ज्यादा होगी, वाइब्रेशंस जो है जल्दी पास होंगे. एंड इन द लिक्विड पार्टिकल्स आर फार अवे एज कंपेयर टू सॉलिड, तो स्पीड ऑफ साउंड इज less as compared to solid. And in the air particles are far away as compared to liquid and the solid, so speed of the sound is less in air as compared to solid and liquid. You should know the reason. आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है. ये पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है. सॉलिड के पार्टिकल्स पास में होते हैं, इसलिए उसमें सबसे ज्यादा होती है स्पीड्स. लिक्विड के पार्टिकल्स एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़े दूर होते हैं, इसलिए उसमें साउंड की स्पीड कम हो जाती है सॉलिड के कंपैरिजन में. और एयर में पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड कंपेयर टू लिक्विड, सो साउंड की जो स्पीड है वो एयर में कम होती है. क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको गैस करना है कि विच हैज द हाई पिच sound of a guitar, car horn. Which has the high pitch? So guitar has the high pitch sound as compared to car horn. If here is asked कि which has the high amplitude, यहाँ पर अगर एम्पलीट्यूड पूछी जाए कि एम्पलीट्यूड किसकी ज्यादा होगी, यानी कि लाउडनेस किसकी ज्यादा होगी, तो लाउडनेस किसकी होगी? कार
पोएम की। तो याद रखिए आपके दिमाग में इस बात को। पिच गिटार, साउंड ऑफ गिटार हैज हाई पिच एंड sound of car horn has high loudness. Now next question, distinguish between loudness and intensity of sound. Loudness क्या है, intensity क्या है? तो loudness क्या है? Loudness of the sound हम किसे कहेंगे? That make our ears to differentiate between a faint sound and a loud sound. जो साउंड की क्वालिटी हमें ये डिफ्रेंशिएट करती है, हमारे कानों को इसके लिए तैयार करती है कि ये फेंट साउंड है या ये लाउड साउंड है, उसको हम कहते हैं लाउडनेस। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज द एनर्जी ऑफ द साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, द एवरेज एनर्जी ट्रांसपोर्टेड बाय ए साउंड वेव पर सेकंड पर यूनिट एरिया in the direction of the propagation of the sound is called intensity of the sound. Loudness of the sound is measured in decibel. Loudness of sound is measured in decibel. इसकी यूनिट जो है वो डेसिबल है। and unit of the intensity is watt per meter square. Watt per meter square. Loudness of the sound depend on the सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर्स। किसी को कोई साउंड लाउड लग सकती है, किसी को नहीं लग सकती, तो ईयर्स की क्या सेंसिटिविटी है उस पर डिपेंड करते हैं। एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज नॉट डिपेंड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर्स। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर इंक्लूड इन योर एनसीईआरटी बुक लेसन क्वेश्चंस, यानी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी की बुक के इंटेक्स्ट में क्वेश्चंस हैं। इन सबको आप रिवाइज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।